Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed pteridophytes and some gymnosperm. And now we are going to discuss how gymnosperm reproduce. The second highermost plants are gymnosperms. Let's discuss with gymnosperm. Transpiration. Even the thick cuticle and sunken stomata on the leaves reduce the rate of water loss. जिम्नोस्पर्म की खास बात देखें, जो स्टोमेटा होता है इस जिम्नोस्पर्म में वो कहाँ होता है, वो संकेन होता है. संकेन का मतलब होता है जो सपोज करो ये एटम ये हमारे जो जिम्नोस्पर्म का लीफ है, राइट, लीफ के अंदर स्टोमेटा होना चाहिए. तो संकेन का मतलब हो कि बेटा क्या हुआ, ध्यान से देखो, जब भी हम संकेन बोलेंगे इसका मतलब मान लो ये स्टोमेटा तो ये अंदर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ, राइट. ये स्टोमेटा कहाँ होंगे, अंदर की तरफ. संकेन मतलब अंदर, ताकि डायरेक्ट ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस ना हो पाए. The reproductive structure of a gymnosperm is called a strobilus or a cone. स्ट्रोबिलस कोन. And gymnosperms have both male and female strobili. नोट इट. Interestingly, फीमेल. the strobili may be born on the same tree as seen in Pinus, or on different trees as seen in Cycas. साइकस में डिफरेंट ट्रीज में मेल और फीमेल होते हैं, यानी कि साइकस मेल प्लांट होता है, साइकस फीमेल प्लांट भी होता है, पूरा का पूरा प्लांट ही मेल और फीमेल होता है. जबकि पाइनस में क्या होता है, एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट. स्ट्रोबिलस. The male strobilus has spirally arranged leaf-like structures called microsporophylls, नोट द पॉइंट्स. which bear microsporangia, a structure that produces haploid microspores. A few microspores develop into male gametes called pollen grains, and the rest degenerate. Another name for male strobili is microsporangia. The female strobilus is a cluster of megasporophylls which bears ovules containing the megasporangium or nucellus. न्यूसेलस. The megasporangium, surrounded by a layer of envelopes, produces haploid megaspores and a megaspore mother cell which looks distinctly different from the other megaspores. The megaspore mother cell undergoes meiosis to give rise to 4 haploid megaspores. नोट द पॉइंट्स. हैप्लोइड. One of these spores develops into a multicellular female gametophyte. टर्म समझें, इन चार में से केवल एक फीमेल मेगास्पोर होगा जो मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बनेगा, यानी कि 3 क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट. आगे देखें. The female gametophyte further bears 2 or 3 female sex organs called archegonia, which develop inside the ovule. The development of archegonia is followed by the fertilization process, during which pollen grains released from the microsporangium are carried by air currents and come in contact with the micropyle, an opening in the ovules. A pollen tube sprouts from the pollen grain and grows towards the archegonium, where it discharges the male gametes. These gametes fuse with the egg to form a zygote. Post-fertilization, the zygote develops into an embryo and the ovule into a seed. Interestingly, gymnosperms were the first plants to have a seed habit. Yes, gymnosperms are the first plant to have seeds. जैसे फिर से रिवाइंड करें अपनी क्लास को, जरा याद करें, हमने क्या बताया था, सबसे छोटे प्लांट्स क्या थे, थैलोफाइट्स नाम लिया था जिनको हमने, थैलोफाइट्स याद होगा आपको, जहाँ पर क्या था, थैलस पाउच जैसी बॉडी थी, इनके ऊपर डेवलप हुए थे ब्रायोफाइट्स. इनके ऊपर बोले तो इनके बाद कौन डेवलप हुए, ब्रायोफाइट्स आए थे, इनसे ज़्यादा एडवांस थे. इनसे ज़्यादा एडवांस कौन आए थे बाद में एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स ज़्यादा एडवांस कौन, यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में सीड्स नहीं थे. टेरिडोफाइट्स आर द वन हैविंग फर्स्ट डेवलप्ड व्हाट, ट्रू रूट. यही तो पॉइंट्स आपको समझने हैं.
true stem and true flower. Is it? True root, true leaves. याद रखेंगे। तो टेरिडोफाइट्स कौन थे? ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स डेवलप किए थे। जब फ्लावर्स की बात करेंगे तो याद रखें, तो वो जिम्नोस्पर्म बनने शुरू हुए थे जिनमें प्रॉपर सीड बनने शुरू हुए थे। राइट, सीड बनने शुरू हुए थे, जिम्नोस्पर्म में पहली बार देखने को मिले। और कंप्लीट फ्लावर किस में देखने को मिलता है? वो मिलता है एंजियोस्पर्म में, जो आपकी मॉडर्न प्लांट कहलाते हैं। Gymnosperms are widely used to make products such as varnish and cosmetics. They also provide us with lumber that's used to make furniture. You must have come across banana plantations, apple orchards, or herbs such as basil. You may have also seen flowers such as lotus and roses growing in ponds and gardens. All these are species of flowering plants, also called angiosperms. These are plants in which the ovules develop inside the flowers. The seeds too are enclosed in fruits, and they can be monocotyledonous or dicotyledonous. A typical flower of an angiosperm contains the stamen and the pistil, the male and female sex organs respectively. The stamen consists of two parts, filament and anther. The microsporangia inside the anther contain the microspore mother cells. These mother cells undergo meiosis to produce microspores, which then develop into pollen grains, the male gametophytes. The pollen grains are produced inside the anther. On the other hand, the pistil consists of the stigma at the tip, followed by the style in the middle and an ovary at the base. तो ये तुम्हारा गाइनोशियम हुआ। पार्ट ऑफ पिस्टिल मीन्स दिस इज द फीमेल पार्ट। तो अगर पूछा जाए जो एंजियोस्पर्म में स्ट्रक्चर्स आप कैसे बताओगे, याद रखेंगे सबसे बाहर की तरफ होता है कौन? करोला। ये देखो जो आपको दिखाई पड़ता है। और उनसे ही बाहर कौन होंगे? इधर नीचे की तरफ, जिसको आप बोलते हैं सबसे नीचे की तरफ, इनको बोलेंगे कैलिक्स। सबसे नीचे की तरफ एक ऐसे पत्ती जैसे आपको ग्रीन कलर दिखाई पड़ेगी, जिसे हम बोलेंगे कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम, और सबसे बीच में ये जो आपको दिख रहा है पिस्टिल, ये पूरा पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको बोलते हैं गाइनोशियम। तो KCAG जैसे भी देखें, ये आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, ये कैलिक्स है, ये करोला है और ये एंड्रोशियम है, और सबसे बीच में क्या है? ये गाइनोशियम है। ठीक, तो जो फ्लावर होता है बेसिकली, फ्लावर में मेन पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फीमेल पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? G से, गाइनोशियम, गाइनिकोलॉजी से कनेक्ट करें इसको। The ovules or the megasporangia are present inside the ovary. These ovules contain the megaspore mother cell, which, following meiosis, develops into the haploid female gametophyte called the embryo sac. Meiosis के थ्रू The embryo sac has a three-celled egg apparatus consisting of one egg cell, two synergids, three antipodal cells, and two polar nuclei. पोलर न्यूक्लियाई, ये एक पूरा ओव्यूल है, ये पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? पूरा फ्रूट बनाने वाले हैं। याद रखेंगे भी, अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा टर्म है। The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Not the point. The embryo sac now becomes ready for fertilization, which in the case of angiosperms takes place by a process called pollination. Pollination. During pollination, the anther disperses the pollen grains, which are then carried by agents such as the wind and insects, Insect में and are deposited over the stigma of a pistil. Here, the pollen grain germinates and produces a pollen tube. This tube penetrates the tissues of the stigma and style to enter the embryo sac inside the ovule. ध्यान से देखें इस पॉइंट को। कोई मान लो हनी बी उड़ के आई और किसी फ्लावर के ऊपर बैठ गई,
राइट। तो ये ध्यान से देखें, ये क्या था, ये इतना पिस्टल पार्ट था जो आपको दिख रहा है, पिस्टल पार्ट है। इसके सराउंडिंग में कौन होते हैं, एंथर्स भी होते हैं। ऐसे मैं लगा देता हूँ एंथर्स, यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ एंथर्स। ये एंथर्स हो गए। एंथर्स कौन होते हैं, मेल पार्ट होते हैं, राइट। ये एंथर्स हो गए। इनको कवर करने के लिए कौन होते हैं बाहर से, पेटल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं करोला। क्या बोलेंगे, ये देखो ये पेटल्स बाहर से कवर कर लेते हैं, ये पेटल्स हो गए, करोला जिसको आप बोलते हो। इनको भी बाहर से कवर करने के लिए कैलिक्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स काम क्या होता है, बिल्कुल याद अच्छे से ध्यान से देखो, तुमने कली देखी होंगी। जस्ट फ्लावर फुल्ली डेवलप होने के पहले जो कली होती है इसको बोलते हैं बड। जो बड फॉर्म में ग्रीन आपको कली दिखती है किसी भी फ्लावर की, तो बाहर जो ग्रीन की कवरिंग होती है वो इसी यही होती है, कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स ये देखो सिंबलाइज करते हैं के से। करोला जो पेटल्स होते हैं इनको सिंबलाइज करते हैं सी से, साइंटिफिक टर्म है ये, बॉटनिकल टर्म है। अंदर हो गया ये एंड्रोशियम, जिसको सिंबलाइज करते हैं, ये क्या होने, मेल पार्ट दिखाता है ये एंड्रोशियम। और ये सबसे बीच में कौन हुआ, ये फीमेल पार्ट हुआ, जहाँ पे आपके क्या देखोगे, ये क्या है यहाँ पर, स्टिग्मा। ये पूरा लंबा सा है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे का पार्ट क्या हो जाता है, ओवरी। अच्छे से याद रखेंगे, तो ये पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। तो देखा क्या जा रहा है यहाँ पर, जब भी कोई हनी बी के थ्रू यानी कोई इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आके सेटल हो जाएंगे। और यहाँ पे एक बनती पॉलन ट्यूब, जिसमें देखो आपको दिख रहे हैं ये और ये, देखो दो दिख रहे हैं, दो गैमीट्स जा रहे हैं और अंदर यहाँ पे जाके इसके एग के अंदर पहुँच के इसको फ्यूज़ कर देंगे यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, बता देता हूँ मैं। एक को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न, जो कि आपका 12th में पढ़ाया जाएगा इसको, ट्रिपल फ्यूज़न। और एक नाम दिया जाएगा, ध्यान से देखें, एक को नाम दिया जाएगा सिंगैमी। क्या नाम देंगे, सिंगैमी। और इन दोनों टर्म्स को मिला के बोला जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। ये हम 12th में पढ़ते भी हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में, डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखेंगे इसे, जनरल टॉपिक है आपका। It discharges 2 male gametes inside the embryo sac, देखो, while one gamete fuses with the egg cell to produce a zygote. The other gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus. 2 तरह डिवीजन हुए ना। This event is called double fertilization as it involves 2 fusions. Interestingly, double fertilization is observed only in angiosperms. After fertilization, the synergids and antipodals degenerate. On the other hand, the zygote develops into an embryo and the primary endosperm nucleus develops into an endosperm, which nourishes the zygote. Simultaneously, the ovule develops into a seed and the ovary into a fruit. Note the point, note the diagram. The seed germinates and the embryo develops into a new plant. Angiosperms are one of the biggest plant groups, and they grow in diverse habitats such as land and water, as well as in different climatic conditions. Besides being a source of food, they supply us with fuel, fodder and medicines. Thus, angiosperms form an integral part of the ecosystem as well as of our daily lives. If you observe the life cycle of any sexually reproducing plant, you will notice that it alternates between a sporophytic generation and a gametophytic generation. This is termed as alternation of generations. Note the point, alternation, very important. In the life cycle of the fern, for instance, the main plant body, a mature sporophyte, bears sporangia, which produce haploid spores through meiosis. These spores undergo mitosis and germinate into a prothallus, a gametophyte with haploid cells. The prothallus bears the antheridium and archegonium that respectively produce antherozoids and egg, the haploid male and female gametes. The fusion of these haploid gametes results in the formation of a diploid zygote, which undergoes mitosis to reproduce a diploid young sporophyte. The young sporophyte soon matures into an adult sporophyte, completing the life cycle.
The plant body thus alternates between a sporophytic generation and a gametophytic generation. However, in different plant groups, either the sporophytic generation or the gametophytic generation is the dominant phase, or in other words, persists for a longer period. Yes, longer period. This difference gives rise to three patterns of life cycle in plants: the haplontic life cycle, diplontic life cycle, and haplo-diplontic life cycle. In the haplontic life cycle, observed in algae such as Chlamydomonas, Spirogyra, and Volvox, the sporophytic generation is represented by a single-celled diploid zygote, and there are no free-living sporophytes. This zygote undergoes meiosis to form haploid spores, which divide mitotically to produce a free-living gametophyte. Since mitosis occurs only in the haploid phase, the resulting gametophytes are also called haplons, and the life cycle is called the haplontic life cycle, wherein the gametophytic generation is the dominant phase. In the diplontic life cycle, observed in Gymnosperms and Angiosperms, the gametophytic generation is represented by a single or a few-celled gametophyte. On the other hand, the dominant sporophytic generation is represented by a diploid, free-living and photosynthetic sporophyte. Photosynthetic term, not the In point. the haplodiplontic life cycle, observed in bryophytes and pteridophytes, दोनों पॉइंट आ गए. ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दोनों टर्म ले लेते हैं. हैप्लो-डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड टर्म भी है, डिप्लॉइड टर्म भी है. both sporophytic and gametophytic generations are multicellular and free-living. However, the dominant phases are different in the life cycle of bryophytes and pteridophytes. कुछ एग्जाम्पल्स भी In हैं. bryophytes, for instance, a free-living thalloid photosynthetic and erect haploid gametophyte represents the dominant phase. On the other hand, the sporophytic generation is short-lived, during which टेरिडोफाइट्स में इसका उल्टा कर देंगे. the multicellular sporophyte is totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. In pteridophytes, the photosynthetic sporophyte with vascular tissues is the dominant phase that alternates with the haploid, independent, गेमेटोफाइट स्टेज. multicellular, saprophytic, or autotrophic gametophyte. नोट द पॉइंट. Apart from bryophytes and pteridophytes, certain algae such as Ectocarpus and Polysiphonia also exhibit the haplodiplontic life cycle. ये दो ऐसे एल्गी हैं जो हैप्लो-डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी दिखाते हैं, राइट, जो कि अलग एक्सेप्शन बन जाते हैं. तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के भी एक्सेप्शन हैं, राइट. भले ही कोई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है, लेकिन उन्हीं में से एक कैटेगरी ऐसी भी है प्लांट्स की जो एक्सेप्शंस दिखाते हैं.